आज का हमारा जो टॉपिक है जिसका नाम हमारा कौन सा है, फिट्स एंड लिमिट्स, आज के हमारे इस मॉड्यूल का नाम है। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, व्हाट इज मार्क्ड एज एक्स इन लिमिट्स एंड फिट्स टर्मिनोलॉजी। करेक्ट ऑप्शन बेसिक साइज। अब देख लेते हैं ये बेसिक साइज का क्लियर वाला डायग्राम, ये हमारा इसका है क्लियर वाला डायग्राम। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। What is the term indicate the difference between maximum limit of size and minimum limit of size? Correct option tolerance. Next question, how many fundamental deviations are in BIS system? Correct option 25. Next question, how many fundamental tolerances in BIS system? Correct option 18. Next question, what is the range of letter symbols used for clearance fit in fundamental deviation? Correct option A to H. Next question, what is the range in grade of tolerance used for fits? Correct option IT 06 to IT 11. Next question, what indicates 25H7 in limits and fits as per BIS? Correct option tolerance size of hole. Next question, what is the tolerance of hole 525 plus minus 0.2 mm? Next question, correct option 0.4 mm. Next question, what is the size if dimensions are within the tolerance zone? Correct option acceptable size. Next question, what is termed as relationship between two mating parts of an hole and a shaft in an assembly? Correct option fit. Next question, what is the term represent 30H7/G6? Correct option expression of fit. Next question, what is the type of fit 20H7/G6? Correct option clearance fit. Next question, what is the type of fit? Correct option clearance fit. ये हमारा क्लियरेंस फिट का क्लियर वाला डायग्राम है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। What H denotes in 25H7? Correct option fundamental deviation of hole. Next question, what is the type of fit? Correct option इंटरफेरेंस फिट। अब देख लेते हैं थोड़ा डायग्राम क्लियर करके, तो ये हमारा इंटरफेरेंस फिट का क्लियर डायग्राम है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। What is indicated as basic size? Correct option size with dimensional deviations. Next question, what H denotes in the drawing? Correct option fundamental deviation of hole। ये इसका क्लियर वाला डायग्राम है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which letter symbol indicates fundamental deviation in shaft vestige system? Correct option H. Next question, what is type of fit if hole is bigger than the shaft? Correct option clearance fit. Next question, which term indicates the external features of a component that are not cylindrical in limits and fits? Correct option shaft. Next question, what is the type of fit for hole? Correct option transition fit. Next question, what is the system if the shaft size is varied to get different classes of fits? Correct option hole basis system. Next question, what is the upper and lower deviation value in microns for 30H in standard chart? Correct option plus 25 0 इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the upper and lower deviation value in millimeters for 30H7? Correct option plus 0.25 0.00. नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the maximum and minimum limit of hole? करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन इसका हमारा 30.025 mm एंड 30.00 mm इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम इंटरफेरेंस? करेक्ट ऑप्शन 0.35 mm इसका करेक्ट ऑप्शन था। देख लेते हैं थोड़ा डायग्राम क्लियर करके, तो ये हमारा इसका क्लियर वाला डायग्राम है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द मिनिमम क्लियरेंस इन गिवन फिट? तो ये क्वेश्चन का क्लियर वाला डायग्राम है ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो हमारे आंसर को खोजने में। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, अब हम बढ़ते हैं इसका आंसर पर। आंसर कौन सा है इसका करेक्ट वाला? 0.007 mm इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू इंडिकेट द फंडामेंटल डेविएशन ऑफ हॉल इन BIS सिस्टम? करेक्ट ऑप्शन कैपिटल लेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन,